Thank you.
Okay. Assalamu alaikum and good afternoon to all of you. Am I audible? Assalamualaikum. Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. So I'm going to share my screen as um, uh, a couple of weeks back, we discussed about the metacognition. So today we are going to continue that. So okay. So before starting today's topic, I just want to revise what we did before. So we talked about metacognition, and as I told you, metacognition is the new approach of learning, and most of the times it is helpful when you are actually studying in higher grades, like you're doing your bachelor's or masters or PhDs, but nowadays, as I told you that day, that it is considered very useful even for the beginners, like in the early years of education of a child. This is found very useful now. So what metacognition is, it is all about what a student has or in his mind or before his eyes. So it all starts with what I'm feeling, then it goes up to what I'm thinking, then what I'm seeing, what I'm wondering, and what I am noticing. And it is used to make decisions, to maximize learning outcomes, and help students to reach their goals. Actually, in this sort of method of learning, student actually has to make decisions for himself, and student actually has to think what he or she wants to study, and he has to make his strategies as well, and he has to set the goals as well. The teacher is just to provide the help if he needs. He is there as a guide, but he cannot impose his knowledge upon the children or the students. So, metacognition is thinking about one's thinking process, means you, whatever the thinking process is, as I showed you in that, and that is thinking process starts with what I'm feeling and then what I think about that. That it also talks about what I'm seeing and what I'm wondering and what I'm noticing. So metacognition is about all this thinking process. Then thinking of not only the what of learning, but the how of learning. Because in our conventional way of teaching, uh, actually we only give information. And we talk about the things that are um, that the teacher knows or what she has in her hand. So actually, in metacognition, the student has to find out how of that thing, how or what the teacher is giving, or how or what he has before him. So, in metacognition, the points that should be considered are what you're trying to learn, what you already know, how you're trying to learn it, and how effective your strategies are or they can be, and then what you can do differently to improve your strategies. And in the first lesson, we talked a lot about the strategies, and we'll just talk a little about that today. And when it comes to metacognition process, then obviously it starts with plan. And you all know that every sort of teaching starts with a plan. Rather, we can say that every work starts with a plan. But when it comes to teaching nowadays,
that in modern style of teaching, planning is considered to be the most important thing because you cannot teach well if you have not planned your lesson. So, planning is your approach to learn a topic, especially how you will understand the information. So, planning does not only um, um, it comes to the teacher, but it also goes to the student, how he plans to learn. Then monitoring is actually most of the times if the children are like in their elementary classes or in their junior schools, then the teacher can be the monitor. Sorry, yes, surely I'll tell you. Wait. Okay, so the question is how this process is different from simple teaching. All right, so yes, we are going to discuss it. Let me finish this slide, then I'm going to answer your question. And if anybody, like if you also would like to share something, you have the like chance. Okay, so obviously it starts from planning and then monitor, as I told you, the teacher has to monitor, but the student also has to monitor. And then is evaluation. Evaluation is the result of your learning and how you will modify it. Okay, how is it different from the conventional way of teaching? Actually, in metacognitive approach of learning, the student actually has to take the responsibility of his learning himself. The teacher is only there to help him and guide him, as I'm telling you. So he has to set goals for himself. Then the teacher is there to help him in finding out what his real goals are. And then the teacher is there to help him to make strategies, but the student has to make his own strategies. The teacher can suggest him some things that a student can follow, but teacher cannot impose his strategies or his planning to him. And then the student, this is a self-monitored sort of approach because although like if the student thinks that he needs the help of any expert, then he comes to the teacher and asks him for the help. Otherwise, the student has to monitor his progress himself. And when it comes to evaluation, then first, like obviously, whatever the teacher has planned, he has to appear in that exam, but he has to examine himself as well. As I told you last time, that the student actually has to see whether the strategies he adopted while before attempting any exam, did they work well? What did he not get if he did not um, if he followed those strategies? Yes, this is applicable in colleges and universities, but as I told you last time, that Maria Montessori training is all about the children, even who are not like nowadays, they are that age is considered a school-going age, but even if they are not in school-going age, like it starts from the child who is just 3 years old. So even that Montessori training or Montessori method of teaching, it is all about metacognition because in Montessori, you don't instruct, you just help and you just be there with the students all the time and let them learn. You just provide things. You can direct them at some time, but actually students have to learn by themselves. And the teacher is there to guide them as they are very young, but they have to use their cognition, their own
intelligence, their own interest, what they want to learn, and how they want to learn. So, metacognition is no doubt very helpful in colleges and universities, but nowadays, the modern teaching is all about metacognition, and it is going towards metacognition approach of teaching. So, strategies of metacognition in teaching, as we talked about it last time, and I talked about it in detail, but today I've just put it in a few points. That is recall. Recall means that before starting your learning, you have to see what you know already, what you have in your mind about any specific topic you want to learn. And then you just analyze what you know and what you want to know, where you are and where you want to be. And then interpret what you know and what you want to be, and then start learning and interpreting what you have learned. And then whatever you have learned, apply that information. Benefits of metacognition. Metacognition will help students to be their own indicator. Like it make them independent. Then the students, they really come to know about their own abilities. It makes them more confident, and it actually the most important thing is this, that nothing is being imposed on them. They are learning everything of their own interest, what they want. And they are obviously their own indicators when they prepare tests for them. Yes, as I told you, that they whatever they learned, they prepared the test for themselves, and then they try to solve that. And like in that, obviously the student has to be very honest with them, with themselves. But obviously this metacognitive approach actually helps them to learn the values as well. So it helps the students to prepare themselves for more effective learning in future. And it helps people to think beyond and be a metacognitive person. Now, and today's lesson. And this all starts with, again, metacognition. And as I told you, um, metacognition is actually divided in two parts, and that is metacognitive knowledge and metacognitive regulation. Metacognitive knowledge is all about what you already know, and regulation, how you are actually applying it. Okay. So, when it comes to declarative knowledge, it involves knowing about yourself as a learner and the demands of the task and what learning strategies exist. And then how you plan, because they both go side by side. And first, you talk about your knowledge, and then how you regulate that knowledge. So, whatever you already know, and the demands that um, um, your topic requires, and the demands you have within yourself of the learning you have and the learning you want to get, you have to plan according to that. Then comes procedural knowledge, and it involves knowing how to use learning strategies. And it is also like monitoring. आपने monitor करना है कि ये किस तरह से सारा मेरा जो learning का procedure है, ये किस तरह से चलेगा. Or then comes conditional knowledge, and it involves knowing when and why to use particular learning strategies. ये जो metacognitive regulation है, ये it involves the actions you take in order to learn. सारी जो आपकी जो learning है ना, उसमें जो आपकी नॉलेज है वो तो एक साइड पर है, लेकिन उसको आपने किस तरह से रेगुलेट करना है, हाउ यू हैव टू ब्रिंग इट टू एक्शन. सो रेगुलेशन टॉक्स अबाउट ऑल दैट. एंड इवैल्यूएटिंग जो है, इसमें ये रेगुलेशन में इवैल्यूएटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट.
क्योंकि अगर इवैल्यूएशन नहीं है तो फिर आप जो है वो कभी भी अप्रेज नहीं कर पाएंगे उसको, जो कुछ आपकी लर्निंग थी और जो कुछ हुई. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then we have a few factors that affect the strategies students should use, and that is first of all nature of material. लाइक आपने जो आपके जो फैक्टर्स हैं जो कि स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करेंगे, और वो किस तरह से, वो उसमें सबसे पहले ये है कि क्या मटेरियल आप यूज करें, क्या बुक्स आप यूज करें, आप कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं. आर यू मीटिंग विद पीपल हु आर नॉलेजेबल इनफ टू हेल्प यू एंड गाइड यू, या आप कोई बुक्स देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया से उठा रहे हैं, कहाँ से आप ये सारे मटेरियल ले रहे हैं. सो ये बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रैटेजीज, जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं, जो मेटाकॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज हैं, ये उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. और फिर आपका जो है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो भी जो है आपकी स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट करेंगे कि आप किस तरह से अपनी मेटाकॉग्निटिव लर्निंग को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको बेटर बना सकते हैं. Then the type of assessment, the way you are assessing it, then again, as I told you before, that you have to be honest when you are assessing yourself. You can ask, you can take help from any of your friend who is really sincere, anyone who is really sincere to you. आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, आप उनके साथ मिलकर अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, आप खुद सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं. और फिर इसके साथ जो है आपका इंस्ट्रक्शनल मेथड की भी, जैसे हमने पहले भी बात की है, कि आप कहाँ से मटेरियल उठा रहे हैं, आप कहाँ से ले रहे हैं, आप खुद से जो है वो रिसर्च कर रहे हैं. और इसमें रिसर्च जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और यही जो है ना बेस्ट इंस्ट्रक्शनल मेथड समझा जाता है कि रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंट. जो भी आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, जो कुछ भी आप जहाँ से भी रिसर्च करते हैं, जो आपका एक कलेक्टिव वो आ जाता है रिजल्ट, वो ही एक्चुअली आपकी सारी स्ट्रैटेजीज को अफेक्ट कर रहा होता है. क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि इवैल्यूएशन में यू जस्ट हैव टू सी दैट द स्ट्रैटेजीज आई हैड बीन यूजिंग, डिड दे वर्क, क्या उन्होंने वाकई काम किया या नहीं किया. जब हम इस लेवल पर आकर काम करते हैं, देन ऑब्वियसली वी हैव टू सी कि अगर नहीं काम किया तो क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मेरी स्ट्रैटेजीज वीक रही, और अगर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिनकी वजह से स्ट्रैटेजीज आपकी स्ट्रांग रही एंड दे रियली हेल्प यू, देन यू हैव द चांस to use those factors and those strategies again. So there are two main types of strategies, that is जो हमने उस दिन भी बात की थी, मैंने कहा कि आज फिर हम बात करेंगे, और वो उनमें सरफेस स्ट्रैटेजीज हैं, और उनमें जो है वो डीप स्ट्रैटेजीज हैं. और जो सरफेस स्ट्रैटेजीज की जब हम बात करते हैं ना, तो सरफेस स्ट्रैटेजीज में सब वो चीजें आ जाती हैं कि जिनको कि हम नॉर्मली हमारी कन्वेंशनल जो वे है उसमें हम यूज करते हैं. जस्ट गिव मी अ मिनट. जी. और वो उसमें नॉर्मली क्या है कि हमारा जो एक सिस्टम है कन्वेंशनल, उसमें वी जस्ट रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस, उसमें हमारा जो है वो नॉर्मली यही सिस्टम है कि हमारा मैम एक्चुअली हमारी मेमोरी चेक हो रही होती है, हमारी लर्निंग नहीं. हम लर्न करते हैं, हम वी लर्न बाय हार्ट, और फिर उसके बाद जाकर हम उसको जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं. तो इसको जो है ना वो सरफेस लर्निंग कहा जाता है, और सरफेस स्ट्रैटेजी कहा जाता है. और अगर वैसे भी देखा जाए तो हम यहाँ पर जो है वो कभी कभी अपने जो हमारा यहाँ पर पाकिस्तान का सारा सिस्टम है, तो इसको हम इतना ज्यादा वो इसको एक अप्रूवल नहीं मिलता किसी भी तरफ से. बट देर आर सर्टन पॉइंट्स वेयर दीज स्ट्रैटेजीज इवन हेल्प, वहां पर जो है ना ये हेल्प करता है. और ये भी एक तरह से मेटाकॉग्निशन की ही एक टाइप हो सकती है, बट ये बहुत ही जो है ना वो एक सरफेस सी चीज है, और आप बहुत ज्यादा इस पे रिलाई नहीं कर सकते. कुछ सब्जेक्ट्स की जब लर्निंग एंड टेस्टिंग की बात होती है तो उसमें ये हेल्पफुल है, जैसे लिटरेचर हो गया. ऑल्दो लिटरेचर को भी आप रिलेट कर सकते हैं बहुत ज्यादा मेटाकॉग्निटिव
इवैल्यूएशन से, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पर ये जो रिकॉलिंग एंड रिप्रोड्यूसिंग वाला सिस्टम है ये काम आता है। और फिर कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि डीप स्ट्रैटेजीज हैं, जिनमें के हमने जैसे बात की शुरू में ही कि वो हमारा जो है वो स्ट्रैटेजीज वो स्टार्ट होती हैं हमारी प्रीवियस नॉलेज से, और फिर हम उस पर रिसर्च करते चले जाते हैं, हम डिसाइड करते चले जाते हैं कि वो हमने कहाँ पर पहुंचना है। और उस तरह से जब हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं तो फिर हमारा रिजल्ट्स जो हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा बेटर होते हैं। सॉरी, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। I'll try to manage it. So any question up till here? Because like I told Sarayaz and Sister Tabitha that I'll just take the class for half an hour. So I'm about to finish. If you have any question up till now, you can share or you can ask. Or if like you have learned something using metacognitive approach, then you can share that as well. Yes. Okay. Okay. ठीक है। सो डीप स्ट्रैटेजी की जो मैंने बात की है, डीप स्ट्रैटेजी में मैंने बताया है कि जब आप मेटाकॉग्निटिवली आप किसी भी चीज को रिसर्च करते हैं और उसको लर्न करते हैं तो वो फिर आपकी डीप स्ट्रैटेजीज हो जाती हैं। उसमें आप पहले ये देखते हैं कि आपके पास प्रीवियस नॉलेज, आप चेक करते हैं कि वो क्या है, देन यू सेट गोल्स वेयर यू वांट टू रीच। जो है वो अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को सेट करते हैं कि क्या चीजें मुझे हेल्प करेंगी और क्या चीजें नहीं करेंगी। और स्ट्रैटेजीज तो हमने जो है वो बहुत सी लर्न की थी लास्ट लेसन में। अगर आप कहें तो मैं उनको फिर से कर देती हूँ, रिवाइज कर देती हूँ आप सबके लिए, जिनमें के हमने जो है वो ऑब्वियसली यही कहा था कि पहले तो जो सिलेबस है जो आपको टीचर्स ने दिया है आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको यूज करें। देन वी टॉक्ड अबाउट द प्रीवियस नॉलेज एज आई वाज सेइंग। फिर आपको याद हो तो मैंने एक कहा था कि थिंक अलाउड। थिंक अलाउड, लाइक हम सिर्फ स्पीक अलाउड ही नहीं हम कहते, बल्कि थिंक अलाउड कहते हैं। और थिंक अलाउड मीन्स दैट you have to think through your material. You can discuss what you are thinking. You can discuss it with your classmates, your friends, your tutor, or with anyone like that you are comfortable with. And because sometimes just verbalizing your thoughts can also help to make more sense in what you are thinking, and make you sometimes when you discuss things you materialize the things in a way कि वो आपको ना आपके सामने एक रियलिटी के तौर पे आनी शुरू हो जाती है और वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाती हैं। Then deep strategy is asking yourself questions. आप अपने बारे में अब वो जो भी लाइक टॉपिक है उससे अपने लिए उसके बारे में अपने खुद से क्वेश्चंस करें। आप देखें कि लाइक मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता। एंड I gave you a few questions as well. The questions like does this answer make some sense? जो आंसर आपने जो है वो ढूंढा है, is it providing the given information I needed? फिर इसमें जो है वो ये भी कह सकते हैं कि did the strategy I was working, did it solve the problem? Actually, was it helpful? Um, does this information that I've collected now, that I've learned now, does it conflict with the prior understanding I had of that thing? और फिर उसके बाद जो है आपने ये देखना है कि how does the information I have now relate with the things I already know?
और जब आप दूसरों के साथ इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें भी आपने देखना है कि ये जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, ये दूसरों के पास जो उस चीज के लिए इंफॉर्मेशन है उससे कितनी रिलेट हो रही है। फिर आपने जो है वो आप ये भी अपने खुद से क्वेश्चन कर सकते हैं कि मुझे क्या चीज, व्हाट वाज एक्चुअली कंफ्यूजिंग मी इन दिस टॉपिक इन लर्निंग, क्या चीज जो थी वो मुझे कंफ्यूज कर सकती थी, कर रही थी। और फिर जो मेरी स्ट्रैटेजीज थी जो मैं यूज कर रही थी या कर रहा था, अगर इन्होंने मेरी कंफ्यूजन को दूर नहीं किया तो फिर कौन सी स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं कि जो मैं यूज करूं और वो मेरी इस कंफ्यूजन को दूर करें। और फिर इस बात के लिए भी आप जो है वो खुद से भी आप क्वेश्चन करते हुए आप पूछ सकते हैं, देन यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड द ट्यूटर और एनीवन जो कि आपको लग रहा है कि वो इतने नॉलेजेबल हैं कि वो आपको इसमें हेल्प कर सकें, ताकि वो कंफ्यूजन जो है वो नेक्स्ट टाइम ना हो या आपकी कंफ्यूजन जो है वो सॉल्व हो सके। और फिर आप अपने आप से जो है वो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्लास क्वेश्चंस के, लास्ट क्वेश्चन कि मैं ये सब कुछ जो मैंने लर्निंग मेरी हुई है उसमें मैं इसको किस तरह से कंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मेटाकॉग्निशन इज ऑल अबाउट कंक्लूजन, व्हाट यू नो एंड हाउ यू कंक्लूड इट। Okay, thank you. It's a very good question. How we can motivate children while we are applying metacognition. All right. This is एक्चुअली ये आपने स्टूडेंट्स को ये तो नहीं बताना कि आप उनको कोई मेटाकॉग्निटिव अप्रोच के थ्रू आप उनको टीच कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू क्रिएट द सिचुएशन, लाइक सपोज यू आर टीचिंग देम अ साइंस लेसन। लेट्स सपोज आप उनको जो है वो टीच कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पे, ठीक है। सो आपने उनको टॉपिक देना है, कोई अगर आपके पास नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो भी रादर बहुत अच्छा हो कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आप उन्हीं से लें व्हाट दे नो, वो उनका प्रीवियस नॉलेज के तौर पर सामने आ जाएगा। देन गिव देम सम टास्क, दे गिव देम एनी um, um, I'm sorry again, it's a internet problem. ओके, उनको कोई टास्क दें, उनको बताएं कि उन्होंने कहाँ पर पहुंचना है, और उनको उनको आप ये पूछ सकते हैं कि वो इसके बारे में क्या सीखना चाहते हैं और किस तरह से सीखना चाहते हैं। और फिर आपने उनको सिर्फ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। आप उनको लेकर जाएं अपने स्कूल के लॉन में, लेकर जाएं ग्राउंड्स में, लेकर जाएं, शो देम प्लांट्स, जो स्मॉल प्लांट्स हैं, बिगर प्लांट्स हैं, उनको बताएं कि आपने अब रिसर्च करना है कि किस तरह से ये प्लांट जो है ये ग्रो किया, ये इतना छोटा था बड़ा कैसे हो गया। अब वो फिर आपने बच्चों को आप डिफरेंट, आप उनको लाइक डिफरेंट अप्रोचेस के लिए आप उनको गाइड कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ वो किस किस वे में वो लर्न कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से वो अपनी ये लर्निंग जो है वो हासिल कर सकते हैं। और आप उनको डिफरेंट लिंक्स उनके साथ शेयर कर सकते हैं जो वेबसाइट्स के हों, या डिफरेंट बुक्स आप उनको रेफर कर सकते हैं, आप उनको लेकर जा सकते हैं, लाइब्रेरी में लेकर जा सकते हैं, एंड देन लेट देम फाइंड थिंग्स, लेट देम make notes of what they want to learn from that book or that website or anything that is giving the information. So इस तरह से करके आप बच्चों को, and believe me, स्टूडेंट्स इस तरह की लर्निंग को इतना एंजॉय करते हैं कि अगर आप उनको आए, आप एक लेसन डिलीवर करें, आप चाहे उनको पूरी प्रेजेंटेशंस दिखा दें, वो उसके साथ इतना एंजॉय नहीं करेंगे जितना वो अपनी जो उनकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज होंगी ना, जितना वो उससे लर्न करेंगे और उससे इंजॉय करेंगे। और ये नॉलेज जो होगी ये उनके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगी। ये वो नहीं होगा, ये जो हमारा रट्टा सिस्टम है ना, क्रैमिंग थिंग्स, वो वाला जो है वो नहीं रहेगा कि बस अभी याद किया और फिर मुझे भूल गया। जो कुछ उन्होंने खुद से रिसर्च करके याद किया होगा वो हमेशा उनको याद रहेगा। So these were all the strategies. Like I have a few. One, then use writing as we
डिस्कस बिफोर। जो डीप स्ट्रैटेजीज है मैं उन्हीं को ही थोड़ा सा मैं उनको कवर कर रही हूँ, फिर से उसका रिकैप कर रही हूँ। यूज राइटिंग, यानी जो कुछ भी आप जो है वो लर्न करते हैं, आप स्टूडेंट्स को आप उनको जरूर जो है इनकरेज करें टू राइट देम डाउन, क्योंकि वो जो लिख लेने से भी जो कुछ हम लिखते हैं लर्न करते हुए वो हमारे माइंड में हमेशा जो है ना वो रहता है। और फिर अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना भी राइटिंग के साथ जो है ना वो आसान हो जाता है। अगर आप यूं बस लिखते जा रहे हैं और फिर आप दोबारा उसकी रीडिंग करें तो पता चलता है कि नहीं, ये हमारी राइटिंग ये और अच्छी हो सकती है अगर ये चीज जो है हम पहले लिखते थे, या अगर हमारी जो लर्निंग है वो और अच्छी हो जाएगी, हमारी सॉरी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी अगर हम इसको इस स्टेप को हम पहले ले आए। सो राइटिंग जो है ये हमारे नॉलेज को ऑर्गेनाइज भी करती है। और फिर ऑब्वियसली जो आपकी मेमोरी है उससे अपने जो है वो नोट्स आप बनाते रहें, जो कुछ आप लर्न कर रहे हैं उससे नोट्स बनाएं और अपने एग्जाम्स को रिव्यू करें। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो स्ट्रैटेजीज आपको हेल्प की उनको जो है वो आप जरूर कंटिन्यू करें, जिन्होंने नहीं हेल्प किया उनको छोड़ें और नई स्ट्रैटेजीज के लिए आप जो है वो इस पे काम कर सकते हैं। और फिर एक बात और भी मैंने उस दिन आपसे शेयर की थी, दैट वाज टेक अ टाइम आउट। डू यू रिमेम्बर? सो टेकिंग टाइम आउट इज वेरी important, क्योंकि आप अगर कुछ भी करने में आप बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा कभी कभी उससे निकल आना, अपने आप को रिलैक्स करना और दोबारा से उस काम को शुरू करना जो है ना ये बहुत हेल्पफुल होता है। सो टेकिंग टाइम आउट is a very good strategy. Test yourself, and these are the deep strategies of metacognition. I hope this is clear. If still you have any question, you can ask. Okay, and thank you very much, Anam. I'm really enjoying your questions. So, okay, I just want to. All right. So, metacognition during the preparation of exams. अब ये बहुत प्रॉब्लम आ जाता है ना, हम ये सोचते हैं कि ओके लर्निंग तो बहुत अच्छी हो गई, लेकिन अब एग्जाम सर पे आ गए, उसके लिए तो हम यही कहेंगे ना कि अब तो जरूरत है कि हम रट्टे मारें। सो याद रखें, एज आई टोल्ड यू, कि टू एन एक्सटेंट ये जो सरफेस स्ट्रैटेजीज हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको भी हमने सामने लेकर आना ही होता है और ये भी काम करती है। सो अच्छा है कि जब आप लर्निंग, व्हेन यू आर लर्निंग, in the process of learning you use metacognitive deep strategies। और जब आपके एग्जाम्स होने हैं तो उसमें आप जो सरफेस स्ट्रैटेजीज हैं उनको आप उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको रिलाय नहीं करना सिर्फ सरफेस स्ट्रैटेजीज पे। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे हमारे यहाँ एक आम तौर पर होता है कि स्टूडेंट सोचते हो कि कोई बात नहीं, एंड ऑफ द ईयर मैं बस सारी बुक में से मैं याद कर लूंगा और मैं एग्जाम दे दूंगा। सो ये नहीं होना चाहिए। इसी को अम, खत्म करने के लिए हम जो है वो लर्निंग को मेटाकॉग्निटिव अप्रोच पर लेकर जाते हैं, क्योंकि तब फिर बच्चा सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं करता, रादर वो अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी लर्निंग के लिए वो जो है वो वर्क कर रहा होता है। सो हाउ डू दे हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम्स? एक्चुअली
metacognitive um, approach to the preparation of exams is first of all set goals. आप किस तरह करें, अपने गोल सेट करें और अपने गोल सेट करें कि मैंने किस ग्रेड तक जो है वो मैंने जाना है, कितना जीपीए आना चाहिए। फिर उसके बाद अ, जैसे लाइक पहले भी मैंने बात की अपनी अपनी एक, और देखें कि उनमें हम्म, अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन में आप देखें कि आपके कौन से जो एरियाज रहे हैं लर्निंग के वो वीक रहे हैं, और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आप कोशिश करें कि आप पहले उन एरियाज पे काम करें। देन द मटेरियल यू हैव, स्टे अप टू डेट ऑन दैट। यानी जो मटेरियल आपके पास है, एक तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता हो, प्लस अगर उसमें आप रिसर्च करते रहे साथ साथ कि अगर कुछ नई एडिशन हुई है तो वो भी हम इसके साथ साथ ही उसमें यूज करते रहे। देन रिट्रीव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटर देयर परफॉर्मेंस। अब ये तो एक टीचर्स के लिए है कि वो किस तरह से मॉनिटर करें परफॉर्मेंस को, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए खुद भी है। एंड देन मेटाकॉग्निशन आफ्टर एग्जाम्स की तो मैं बार बार बात कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट इवैल्यूएशन। अपने बारे में सोचते रहे कि हम किस तरह से, हमने कहाँ कहाँ लैक किया और कहाँ कहाँ अब हमें काम करना है। प्लस एज अ टीचर भी हमें खुद को इवैल्यूएट करना होता है कि क्या मेरे स्टूडेंट्स के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है और दे हैव रियली गेन्ड सम नॉलेज। सो अगेन आई वुड से कि अगर तो हम मेटाकॉग्निटिव अप्रोच यूज करना शुरू करें तो हम वाकई स्टूडेंट्स को नॉलेज इम्पार्ट कर रहे होते हैं, अदरवाइज तो हम इंफॉर्मेशन तो दे ही रहे हैं। ओके, अब आ जाती है सोशल मेटाकॉग्निशन ड्यूरिंग ग्रुप वर्क। और सोशल मेटाकॉग्निशन जो है इसको भी हमें जरूर प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ग्रुप वर्क। और स्टूडेंट्स जो है इसमें ऑल्दो लाइक जो नॉलेज वो ले रहा है वो उसके अपने लिए है, लेकिन अगर वो नॉलेज शेयर्ड नॉलेज नहीं है ना, तो फिर ये किसी इंडिविजुअल को तो हेल्प कर सकती है लेकिन ये एक सोसाइटी को नहीं हेल्प कर सकती। फिर एक इंडिविजुअल खुद अपनी जात में कोई हीरो बनने का सोच सकता है, लेकिन नहीं हो सकता। इसमें शेयर्ड नॉलेज, शेयर्ड थिंकिंग ही की बात आती है। सो वॉट एवर they are learning, they should share it with each other when they're working in group work। और आप इस मेटाकॉग्निशन के सारे प्रोसेस को अगर ग्रुप में स्टार्ट करवाते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। एक टास्क आपने एक ग्रुप को दे दिया है तो वो बहुत अच्छा रहता है, हर ग्रुप अपनी ही तरह से एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए एक इंफॉर्मेशन लेकर एक टॉपिक पे सामने आ जाता है। और वो जब आप सबके जो है इंफॉर्मेशन लेके कलेक्ट करते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो एक्चुअली वो नॉलेज बन जाती है कि जो कि सबको हेल्प करती है। देन इट सपोर्ट्स इफेक्टिव लर्निंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स। आप स्मॉल ग्रुप्स बनाते हैं लेकिन वो हेल्प किसको करता है, एक बिगर ग्रुप को। देन अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ अदर्स थिंकिंग, इसमें ये भी एक बहुत ही हेल्पफुल बात रहती है
कि आप सिर्फ अपनी थिंकिंग को ही आप जो है वो फाइनल नहीं समझ रहे होते, बल्कि आप दूसरों के लिए भी दूसरे क्या सोच रहे हैं आपको, आप उससे भी अवेयर होते हैं। प्लस आप उसको समहाउ कंट्रोल इस तरह से कर सकते हैं कि अगर कोई भी किसी रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है तो यू कैन direct them to the right path of learning. Then evaluate ideas by shared by peers. आप जो हैं, जो आपके partners हैं, उनके साथ अपने आइडियाज को शेयर करते हुए आप इवेल्युएट भी करते हैं, उनके अपने भी आइडियाज इवेल्युएट हो जाते हैं और आपके अपने आइडियाज भी इवेल्युएट हो जाते हैं. Then a structured guidance from instructors is needed in it. So जब social metacognition की बात आती है तो जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो टीचर हैं, उनका हर ग्रुप के साथ होना, उनमें उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनके उनका उनको इवेलुएट करना, उनको चेक करना, उनको राइट पाथ पे गाइड करना इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आई बिलीव कि अगर ये जो मेटाकॉग्निशन का जो अप्रोच है, अगर इसको फॉलो कर लिया जाए तो हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है. सो जब हम मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं तो मेटाकॉग्निशन के लिए ब्लूम ने बहुत ही इस पर काम किया और इसको हर तरह से उसने इन्फोर्स किया. और आपको जब आप सर्च करेंगे तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी मिलेगी. सो मैं आपको बाय द एंड ऑफ माय सेशन आपको मैं एक टास्क देना चाहती हूँ कि आपने रिसर्च करना है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है और उसके ऊपर एक अच्छा एक आर्टिकल उस पर लिख के कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या है और उसको किस तरह से एजुकेशन में हेल्प करती है, आपने मुझे सेंड करना है. और मैं ये क्वेश्चन आपको आपके ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी. एंड आई होप कि आप सब अपना सेकेंड मॉड्यूल जो है स्टार्ट होने से पहले मुझे इसका जो असाइनमेंट होगा वो आप सेंड कर देंगे. सो थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक्स फॉर बीइंग विद मी. Okay, sir. I need to make you the host now. Sir Rayaz will continue the class now. Okay, you people can take 5 minutes break. तो मैंने रीड कर दिया है और आपको होस्ट बना दिया. ग्रेट ग्रेट, ठीक हो गया. मैं जरा मेरा ओवरव्यू ही है, बल्कि मैंने स्लाइड्स तो आज के साथ मुझे भी टीच करना. अच्छा. वही बात है कि without practice it's always better. It is, seriously, है ना? it is. That's very true. हाँ. Again, the same thing because the help comes from the Lord then. Yeah. Then you don't trust what you have learned or Exactly. what you have done. Uh-huh. Okay, thank you, sir. All right, thanks.
शानी को उधर बुला लो। अच्छा, एक टेबल यहाँ पर है जिसका ये टूटा हुआ है। हाँ, इसको नहीं छेड़ना फिर। ये टूटा हुआ है, इसको उठा सकते हैं। इसको, ओके, ठीक है, उठा ले। हाँ जी, आप उठा लोगे? हाँ जी, इसी से उठा सकते हैं। इसी से उठा के इसको उठा सकते हैं। इसको नहीं छेड़ेंगे। इधर से उठाना, इधर से। हाँ जी, हो रहा है। Hello, good evening and assalamu alaikum. कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। Yeah, this is Riaz, your facilitator for PG Cert again. And thank you for joining. I hope you had a wonderful session with Ma'am Shamaila. Okay, then thank you. Well, module 1 is almost on the finish line. And
As per the announcement, I'm supposed to give you the overview. As you can see, can you see the screen? Is it visible to everyone? Yes, sir, it's visible. Okay, thank you. By the end of today's session, we shall be able to understand the gist of the whole course and particularly what we are going to do after the end of module number 1, which is really important. अगर आपका ये ख्याल है कि मैं आपको पूरे कोर्स की भी आउटलाइन दे दूं तो I have everything with me. However, मॉड्यूल 2 जब स्टार्ट होता है तो प्रोफेसर्स आपके साथ हैं, वो आपको बताते जाएंगे कि क्या क्या उन्होंने करना है. But I have got the full overview with me. तो आपकी जो भी सजेशन है उसके मुताबिक I can follow. Yes, please let me know. And I'm फरहाना रुकैया. अगर आपको ये लगता है कि मैं पूरे की पूरी आज आपको इसकी ओरिएंटेशन में दोबारा से करवा दूं और रिव्यू भी करवा दूं पहले मॉड्यूल का, तो will it be okay with you people? जी सर, करा दे रिव्यू, थोड़ा सा ज्यादा और ज्यादा क्लियर हो जाए. Okay. Module 1 में there's a breakdown of our scheme of study. So module 1, the teaching concepts we have covered, and week 1 and 2 we were able to do educational psychology. Under educational psychology we had key concepts in educational psychology. They were learning theories, for instance, behaviorism, cognitivism, constructivism, and हमने इससे बढ़कर भी किए हैं, वो मैंने एडिशनल चीजें करवाई थी जो कि मैं समझता था एज ए फैसिलिटेटर के आपके लिए मुफीद हैं. And how these theories influence teaching practices, इस पे हमने बात की है. And we were also able to look at applying psychological principles to enhance learning outcomes. That was also very important that we have talked about. We also talked about core concepts in the field project-based learning, which is like PBL. Student-centered learning, हमने इस पे बात की है. And we do understand and recognize the fact that student-based learning is a greater shift that we have in the new or the modern teaching style, and it is really significant that our main focus should not be on teacher-centered learning, but student-centered learning. Shifting the focus from teachers to the students, allowing for greater autonomy and active participation in the learning process. We also studied technology integration, incorporating educational technology to enhance lesson, engage students, and prepare them for a technology-driven future. We agreed that this element is very essential again in our teaching, and especially when it comes to a modern way of teaching. We did talk about inquiry-based learning too, encouraging students to ask questions. myth ये थी
कि प्रोफेसर को सब कुछ आता है और वही स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेगा, और स्टूडेंट क्वेश्चन तो पूछते थे पर कम पूछते थे. I am not negating the fact and trying to refute कि बिल्कुल वो 0% था कि स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछते थे हमारे दौर में भी. But now we have done it like we have made it more open to students. They can, so they should be able to ask you question freely. So it's like the ball is in their court. And together we can explore topics and discover knowledge through inquiry, fostering a sense of curiosity and independent learning. Iske baad, we did talk about critical thinking skills, that we need to create critical thinking skills in our students. इससे मुराद हमारी ये थी कि किसी भी चीज के, किसी भी कॉन्सेप्ट के, किसी भी एक वर्ड के भी कह सकते हैं हम लोग, एक मीनिंग ही काफी नहीं होते. क्रिटिकल थिंकिंग ये कहती है कि वी नीड टू डिग आउट द हिडन मीनिंग्स of any word or concept or whatever we face. So in critical thinking we need to develop critical thinking skill in our students by incorporating activities that challenge students to analyze information critically, evaluate arguments, and make informed decisions. And in addition to that, we were also discussing collaborative learning, like encouraging students to work together in groups. John Maxwell says, when he defines the word team, he says, together everyone achieves more. He defines team like that. And by fostering teamwork and communication skills and the ability to collaborate effectively, that's what we have been also talking under collaborative learning system. Culturally responsive teaching, this is also another essential point. Recognizing and respecting students' cultural backgrounds. बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हम ये समझते हैं कि जो कुछ हमारा कल्चर कहता है वही बेहतर है, जबकि we shall be able to accommodate other culture and specifically students' culture, incorporating diverse perspectives into the curriculum and creating an inclusive learning environment. We talked about experiential learning, which is like experienced or experiment-based learning, providing hands-on experiences, field trips, practical applications of knowledge to make learning more tangible and relevant. And environmental and sustainability education, integration content and activities that raise awareness about environmental issues and promote sustainable practices. That is the end of module number 1. Well, thank you so much for being with me, and I can take your feedback with regard to module number 1, or I can take your questions as well. Thank you. Go ahead, please. Anam, any question, please? No, sir. No, sir, it's all clear. I don't have any questions. तो थोड़ा फीडबैक तो देना, कुछ बताएं. मॉड्यूल में हमने ये सारी जो
चीजें भी आज हमने दोबारा से देखी हाईलाइटेड, तो ये हमने सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर ली हैं। जी सर, ये डेफिनेटली हेल्प आउट करेंगी हमें आगे जाके इंशाल्लाह इन फ्यूचर, जो भी हम लोग करेंगे। और इसने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है, बिकॉज आई एम न्यू लर्नर, तो मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा आया पढ़ के, और अच्छा भी लगा, और बहुत सारा न्यू नॉलेज मैंने सीखा है। कुछ चीज़ें वही बात है, नॉलेज जो कुछ मुझे पता था और कुछ मैंने न्यू नॉलेज सीखा, तो उसको मिला के जो मैंने लर्निंग की है वो डेफिनेटली इट्स एन ऑसम लर्निंग, आई मस्ट से। Okay, Farhana, your feedback or any question? Yes, sir. All clear. All topics are clear up till now. And क्योंकि मेरा थोड़ा सा वे ऑफ टीचिंग थोड़ा सा मॉन्टेसरी के स्टूडेंट्स का है, और जो मेरा एज ग्रुप जो है वो थोड़ा सा यंगेस्ट है। तो लेकिन ये है कि ये मुझे बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं, जो भी टॉपिक्स हैं उससे मैं मेरी टीचिंग के लिए जो भी इसमें से यूजफुल पॉइंट्स होते हैं मैं उनको मतलब उनसे बहुत हेल्पफुल हो रहे हैं मुझे सीखने में। जैसे इसमें जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे कल्चरली रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसको मैं अपने यानी कि यहाँ के उससे जब करके देखती हूँ तो मुझे मतलब वही लगता है कि शायद मेरे साथ यही हो रहा है, वही सब कुछ जो इसमें मैं पॉइंट्स पढ़ रही हूँ और जो इससे सीखने का मौका मिल रहा है, तो मैं उससे अपनी रियल लाइफ में भी जो है अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। और अब तक ऑल टॉपिक्स के लिए। कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं इसको थोड़ा और बेहतर कर सकें, इम्प्रूव या इम्प्रोवाइज कर सकें? सर बस ये है कि थोड़ा सा कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको समझने में मुश्किल आती है, लेकिन ये है कि जब डिस्कशन होती है, ग्रुप डिस्कशन होती है, और फिर आप एग्जाम्पल से और फिर मेरी एक्सपीरियंस से और दूसरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एक्सपीरियंस से जब हो जाता है कि हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं। तो ये है कि इसमें मतलब मेथडोलॉजी जो है उसमें हमें अप्लाई करने का मौका मिल रहा है अपने रियल टीचिंग लाइफ में भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो है वो ऑल टॉपिक्स क्लियर है। Yes, Ma'am Ruqayya, what is your take? यस सर। सर मेरे लिए तो सारी चीज़ें न्यू थी, साइकोलॉजी की मुझे तो इसके बारे में कोई नो हाउ नहीं थी। तो जब इन सारी चीज़ों को जब हम लोगों ने रिलेट किया, और जैसे रिसर्च के बीच में टॉपिक्स थे, और जो है वो लर्निंग एप्लीकेशंस हम लोगों ने पढ़ी, मेथोडोलॉजीज पढ़ी, जिसमें जो है वो सारी क्लासिकल थेरीज आई और फिर एडवांस थेरीज आई। तो सर वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और मज़ा आया, नॉलेज भी गेन हुआ और इंटरेस्टिंग भी था। और सर पहली दफा एहसास हुआ कि मतलब ऐसी चीज पढ़ें कि जो हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा ही हमारा एजुकेशन सिस्टम होता है कि सर बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी कहीं नजर आ नहीं रही होती, हमें इतनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती। लेकिन ये करने में बहुत मजा आया। ओके, अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक करें तो मैंने असाइनमेंट नंबर 2 आपको भेज दी है अभी। ये सर देखिए मैंने। देख लिए सबने? इस पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो कल इस पे हम बात करेंगे। और फिर आपको अगर इसको स्पेशली इसका फॉर्मेट जो है उसको करने का, उसकी साइटेशन का, उसका जो कवर पेज है उस पे हम कल बात करेंगे। आप इसको पढ़ना और इस पे थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे कल, ताकि फिर आप नेक्स्ट वीक तक बिफोर द 10th of March आई थिंक यू शैल बी एबल टू हैंड ओवर टू मी। ठीक है? ठीक है सर, इंशाल्लाह। Inshallah. Okay, let's go to module 2 that is going to start. Of course, ये ओवरऑल तो मतलब आपके जो फैसिलिटेटर्स होंगे उनके रेलेवेंस वो आपको सारा कुछ करवा देंगे। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये सारे एज ए बिकॉज कोर्स कंटेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। I don't want to say like I'm heading this because Ma'am Tabitha is like coordinating, but I really work with her, and I just want to make things more clear. कि मॉड्यूल नंबर 2 है, फिर उसके बाद 3 and 4 है,
तो ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि ये चीज़ें क्लियर हैं, जो कुछ हमने पढ़ना है, कल को जो हमारे पास सर्टिफिकेट आएगा उस पे क्या कुछ होगा, सारा कुछ. सो एटलीस्ट लाइक if you are teaching in abroad or you want to travel, at least you should be able to, match up the things with other schools and institutes. So model number 2 says in this way, employability and work-based learning. Week 7 to 12, employability and work-based learning. And इसका जो main point है वो है learning domain. They shall be talking, or we shall be talking about memory, attention, perception. We're talking about students and problem solving, understanding how cognitive process impact learning. चीजें थोड़ी सी वो रिव्यू भी होंगी और थोड़ी सी रिपीट भी होंगी, क्योंकि टीचिंग है तो टीचिंग में चीजें मॉड्यूल एक दूसरे के साथ रिलेट कर जाते हैं. Then number 2, motivation and learning. The role of motivation in student engagement and strategies for fostering and sustaining motivation. We shall be discussing learning styles, like different models of learning styles. Professor Saab, he's a highly recognized and educated man, and he's a writer as well, and content writer. He's such a nice personality. He wears, like, his behavior is great and all that. So he shall be talking about models of learning style, adapting teaching methods to accommodate diverse learning preferences. Social and collaborative learning, इस पे थोड़ी सी हमने बात की थी मॉड्यूल नंबर 1 में. The importance of social interaction in learning process, facilitating effective group work and collaborating. Inquiry based पे ज़्यादातर आपकी बात हो चुकी है, but he will come up with his own perception and methodology when he's going to talk inquiry based learning. But James Litton, Dr. James Litton, he's also our CEO. He shall be also pitching in when we are going to talk about module 2, Ma'am Tabitha and some other professors as well. Designing and implementing inquiry based lesson. तो यहाँ पे डिजाइनिंग की भी बात होगी कि आपने इंक्वायरी बेस्ड लेसन डिजाइन कैसे करने हैं. It's like actually bringing the talent and learning beauty out of the students and encouraging students to ask questions and explore independently. Learning strategies will also be further taught, incorporating hands-on activities and participatory learning techniques for keeping students actively engaged in the classroom. This is a really profound thing, that how can we make our students more proactive and involved in the classroom. We're talking about their participation. Learning disabilities and special education, understanding common learning disabilities, differentiated instruction for students with diverse needs. We shall also be talking about global perspectives in education, कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, and what are people actually thinking about education, the importance of education, preparing students for a globalized world, integrating global issues into the curriculum. Ethics in education, that's another important and significant aspect in teaching, कि हमने ethics को कैसे देखना है. क्या हम इम्पोज कर रहे हैं कि जो कुछ हमारी एथिकल वैल्यूज हैं अरब कंट्रीज की या एशियन कंट्रीज की या वेस्टर्न वर्ल्ड की, क्या वही सूटेबल और बेहतर हैं और या बेस्ट हैं स्टूडेंट्स के लिए, और
आया कि हम जो उनकी एथिकल वैल्यूज हैं उनको भी अडॉप्ट करके उनको इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, या उनको फिर हम कस्टमाइज करके हम किस तरह से उनको अपनी टीचिंग में मोर वैल्यूबल बना सकते हैं. प्रमोटिंग एकेडमिक integrity and responsible conduct. That's module number 2. And then module 3, we shall be talking about information and communication technology. ICT, which is like information and communication technology, overview of the role and importance of ICT in modern education, historical context and evaluation of technology in education. प्रोफेसर खालिद मसूद साहब, उनके साथ एक और हैं प्रोफेसर नियाजी साहब हैं, और फिर डॉक्टर प्रोफेसर हकनवाज साहब होंगे. And we shall be having more professors facilitating module number 3. Educational technology tools, online learning platforms, as we are just doing it now with you. Overview of various education technology tools, practical application and benefits of each tool, and online platforms, creating digital content, developing multimedia presentations and educational materials, incorporating images, audio, video, and interactive elements. Online learning platforms. Again, oh, sorry. Yeah, it's the same thing, but with a different kind of I think here, यहाँ पे थोड़ा सा problem. I will just check it, just cross check it. Exploring using online platforms for virtual classrooms, managing and facilitating online discussions and activities. इनको कैसे manage करना है? या आपको ज़्यादातर का पता है इनका. Blended learning approaches combining traditional and online teaching methods. कैसे आप इन दोनों को combine कर सकते हैं? And then designing effective blended learning experiences. ये बड़ा ज़रूरी है, जिसकी नीड है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल है किसी भी कंट्री का, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेडिशनल बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल एक बेस थी. एंड देन वी आर इन अ न्यू टेक्नोलॉजी world, and also having modern and a paradigm shift in terms of teaching. However, we need to bridge the gap, not to negate the old one, and but also say thank you to the old one and adopting the new one, so accommodating the both, designing different effective blended learning experiences. We shall also be talking about digital assessment tools. Module number 3 में using technology for formative and summative assessment strategy for implementing online quizzes, surveys, and digital portfolios, and gamification in education. कि मतलब sports के through जो हम छोटे छोटे गेम करवाते हैं, उनके थ्रू हम किस तरह से मतलब के बच्चों को हम लर्निंग करवा सकते हैं. Using game-based elements to enhance learning, designing game field activities and assessment. And this model, in addition, will talk about emerging technologies in education, exploration of emerging trends such as virtual and artificial intelligence. We're talking about AI, considerations for integrating new technologies responsibly. ICT and classroom management, managing devices and technology used in the classroom, addressing challenges and fostering a positive digital learning environment. Module 4 will explain from weeks 19 to 24, learning assessment and evaluation, principles of assessment, understanding the fundamental principles that guide the assessment process, the purposes and importance of assessment in the learning cycle. बहुत ज़रूरी है हम चीज़ों को assess भी करें कि हम कहाँ से हैं, कब हमने start किया है, time के हिसाब से, कहाँ तक हम पहुँचे हैं,
आज कहाँ तक हैं और कल को हम कहाँ तक पहुंचने का इरादा रखते हैं। सो असेसमेंट जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, इसको हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारा लर्निंग का डिफरेंस कितना आया है। चैलेंजेस ऑफ असेसमेंट, assessment ethics भी है उसमें कि when you're going to employ your assessment, you need to have proper ethics, uh, because we are very much careful and concerned about using our ethical values and also applying them, ethical considerations in assessment practices, ensuring fairness and equity in assessment. कि भाई फलां का बच्चा वो ज्यादा अमीर आदमी का बच्चा है तो उसको हम ज्यादा मार्क्स ना दे दें. So this is also I understand this is also very important. Types of assessment, differentiating between formative and summative assessment, exploring alternative assessments such as project-based assessments and portfolios. We also shall be talking about standardized testing, understanding the role and limitation of standardized tests, preparing students for standardized assessment. हमारे पास एक यार्ड स्टिक है ना जिसके थ्रू हम असेस करते हैं. फरहाना, what is your thinking about this standardized testing as a teacher? फरहाना, बच्चे आप सुन रहे थे? Yes, sir. स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग आप किस तरह वहां पे इस्तेमाल करते हैं? यानी कि ये क्राइटेरियन है ना टेस्ट करने का जिसको हम यार्ड स्टिक कहते हैं कि बच्चों को मार्क्स या उनकी ग्रेडिंग कैसे करें, उनके पेपर्स की असेसमेंट की, उसको असेसमेंट असेस कैसे करना है. ये सर हमारे यहाँ तो जो है इतना मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता बच्चों को असेस करने का। लेकिन ये है कि हम जो उनकी परफॉर्मेंस होते हैं, जो हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, किस तरीके से फॉलो करते हैं, फिर उसके लिए आपसे उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। कुछ बच्चे जो है बहुत अच्छा उनको जो भी हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं और तो उसको मतलब क्विकली फॉलो करते हैं। कुछ जो बच्चे होते हैं वो एवरेज में करते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं लर्निंग में। लेकिन ये कि बहरहाल उनकी जो हम ग्रेडेशन करते हैं, मार्किंग तो नहीं होती उनकी इस लेवल पे, तो फिर हम उनकी ग्रेडेशन के मुताबिक जो है उनको असेस करते हैं और उनकी जो है परफॉर्मेंस को पहले हम चेक करते हैं, फिर उसके मुताबिक उनको हम असेस करते हैं क्या है। So that's a standardized testing according to the age group that you are in, isn't it? यस सर। Performance based assessment होगी, designing assessments that require students to demonstrate skills and knowledge, authentic performance tasks and assessments, balancing summative and formative assessments, strategy for maintaining a balance between assessment that evaluate learning and those that inform learning. I need to reword this statement. I need to reword. I will do it later. Constructing reliable and valid assessment, understanding reliability and validity in assessment techniques for ensuring the accuracy and fairness of assessment. ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई टेक्निक्स है हमारे पास कि हम कहते हैं कि हम फेयर हैं and also we are accurate at the same time. And technology in assessment का है leveraging technology tools for assessment purposes, online quizzes, interactive assessment, and digital portfolios, grading and reporting, developing fair and transparent grading practices, communicating assessment results effectively to students and parents, professional development and assessment, staying updated on assessment trends and best practices, collaborating with colleague for professional growth. That would be the end of module number 4. And then इसके बाद होगा आपका project, आपका research paper, आपकी presentation, and then we will, by the grace of God, we will be talking about our graduation. मेरा ख्याल है कि आज हमारी
ज्यादा चीजें क्लियर हो गई हैं। ये आपके सामने है बच्चे, सब कुछ जो हम करवा रहे हैं। हेलो। यस सर। Yes, sir. अगर कोई भी क्वेश्चन हो विद रिगार्ड टू द कंटेंट्स ऑफ आवर कोर्स, तो प्लीज फील फ्री, और कुछ में एडिशन आप करना चाहते हैं, वी ऑलवेज हैव सम रूम। तो आप हमारे साथ, यू आर आवर पार्टनर्स, सो टॉक टू अस प्लीज। तो शाम Excuse me, sir. I have a question. प्लीज गो अहेड। Sir, I want to know that in this all course, we need to make assignments and thesis as well. The both things we will do. वो ये मतलब फर्ज करें भी ना, मैंने आपको सेकंड असाइनमेंट दे दी है ना। पहली वाली बहुत सारे लोगों के आके आ गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा उसमें मिक्सअप हो गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ स्टूडेंट्स की नहीं है, या फिर वो मैंने अभी प्रिंट करके वो उनको ग्रेड नहीं किया। फाइनल जो पेपर जब होगा ना आपका, फाइनल वहां पे आपका थीसिस होगा, लेकिन वो भी थीसिस जो है ना, हमारा चूंकि ये सिक्रेट आवर का कोर्स है तो बड़ा थीसिस नहीं है। मेरा ख्याल है मैक्सिमम होगा आपका वो 15 to 20 पेजेस, इससे ज्यादा नहीं है। और फिर वो जो आप थीसिस करेंगे आपने उसको हमारा जो होगा, वी आर गोइंग टू कंडक्ट एम्पोरियम समथिंग लाइक दैट, तो फिर उसमें आपने प्रेजेंटेशन देनी होगी उसकी। All right, sir, thank you. हाँ, वो बड़ा थीसिस नहीं है जिस तरह वो जिसको आपने बड़ा डिफेंड करना हो। तो उसमें हाँ कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं, कोई बोर्ड बैठ के आप कुछ क्वेश्चन एक दो पूछ सकते हैं कि आपने जो प्रोजेक्ट किया है इसका मतलब क्यों जरूरत पड़ी, आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, फिर उस पर आपने प्रोजेक्ट किया है, तो थोड़ा बहुत, लेकिन हार्ड एंड इतना ज्यादा वो हार्ड नहीं होंगे हम आप पे। बट यू नीड टू डू इट, बट यू नीड टू प्रेजेंट इट, या। Or sir, one thing more I want to know. So there will be any case study of any child. It will be included in this all course, or we will do this type of any project. Yani, we can do case study of a child or of a student like that. बेटा आपका जो बेसिकली वेरी गुड, जो हमारा जो जिसके मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ ना, मेरा ख्याल है वो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, कि वो आप केस स्टडी भी कर सकते हैं या फिर आप प्रोजेक्ट वैसे मतलब आपको आप उसको रिटर्न भी दे सकते हैं, बट यू कैन राइट योर प्रोजेक्ट, बट यू कैन डू आल्सो केस स्टडी। केस स्टडी को फिर आपने वो जो मेथोडोलॉजी आपने वहां पे एम्प्लॉय की होगी, आपने बताना होगा, यू नीड टू पुट इन राइटिंग कि मैंने इस चाइल्ड पे केस स्टडी किया तो मेरे पास ये रिजल्ट्स हैं। वेरी गुड, या Yes, वो sir. वो विल एक्चुअली डेफिनेटली डू दैट। पूरा कंटेंट मैंने डिटेल में पढ़ा था ना, तो मैंने कहा कि उससे रिलेटेड जो मेरे माइंड में कंफ्यूजन है, एटलीस्ट मैं आपसे कम से कम एटलीस्ट उसके बारे में जो मेरे अंदर है कंफ्यूजन, उसको तो क्लियर करूँ ना, एज अ टीचर और एज अ मेंटोर, एटलीस्ट आई शुड नो अबाउट दैट, सो दैट्स व्हाई मैंने आपसे पूछा। इट इज वेरी मच क्लियर। बहुत अच्छा है, केस स्टडी करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि पता है क्या होता है बेटा, जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वही कल के आने वाले टीचर्स जो हैं उनके लिए फायदेमंद होते हैं। फिर हम उनको बता सकते हैं कि टीचर सो एंड सो, मैम सो एंड सो, स्टूडेंट सो एंड सो डिड द केस स्टडी ऑन दिस चाइल्ड एंड दीज वर द रिजल्ट्स वी फाउंड आउट। तो वो हेल्पफुल यस होगा सर। हमारे लिए। यस सर, और एक क्वेश्चन और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, बिकॉज जब इंटरनेशनल लेवल पर जब हम टीचिंग करने जाते हैं ना, तो पता है क्या होता है, फिर वो हमसे जो भी हमारे जो हमसे इंटरव्यू लेते हैं, जो भी मतलब फिर वो ना हमसे पूछते हैं कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, और क्या क्या आपने किया था, और काइंडली लेट अस नो दैट व्हाट ही डिड इन योर होल कोर्स। और फिर वो हमसे पूछते हैं कि आपने किस स्टडी पे काम किया था या ये प्रोजेक्ट बनाए थे, फिर वो इस तरह के बारे में ना इंक्वायरी करते हैं। तो मेरे माइंड में इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो वेरी मैंने आप गुड,
बेटा यही तो बात है ना, यही मुझे बात है। सीखने वाली होनी चाहिए। आजकल का दौर चेंज हो गया है। आज वो हमसे ये पूछता है कि आपने जो पहले डिलीवर किया था वो बताएं और वो दिखाएं, और फिर हम उसकी बेस पे आपको एनालाइज करेंगे कि आप आइंदा को क्या डिलीवर कर सकते हो और कहाँ हम आपको फिट करें। वेरी वेल सेड। यस सर, वन ऑफ माय फ्रेंड एक्चुअली शी इज वर्किंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो जब उन्होंने उससे किया तो फिर उन्होंने उससे पूछा कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट काम किया है, कहेंगे आप हमें बताएं और आपने केस स्टडी किया है या नहीं किया है और ये प्रोजेक्ट बनाया है कि नहीं बनाया है। फिर बकायदा उन्होंने जो उनका इंस्टीट्यूट था उन्होंने उनसे पूरी मतलब डिटेल्स मांगी थी कि मतलब आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं और क्या किया है। तो इसलिए मेरे माइंड में ये सवाल आया कि मैं ये आपसे आपका पूछूं। बड़ा वैलिड क्वेश्चन है फरहाना, क्योंकि बात पता है क्या होती है, आमतौर पर लोग क्या करते हैं, किसी की केस स्टडी उठाई, उस पर रात को उन्होंने मतलब उस पर स्टडी की और अगले दिन जाके बता दे कि मैंने ये किया है। लेकिन वो जो जानने वाले वो सोचते हैं कि इनका वाकई ये जेन्युइन वर्क था कि नहीं। तो जब जब आपने किया होता है, वो आपका जेन्युइन वर्क होता है, तो फिर उसको प्रेजेंट करना आपके लिए बहुत अच्छा होता है, एंड यू विल हैव नो प्रॉब्लम टू प्रेजेंट इट। क्योंकि वो आप हम अपनी लैंग्वेज कहते हैं, मतलब मैं खास तौर पे, कि वो जब मेरा बच्चा है तो मुझे पता है कि मैंने उसको किस तरह ब्रिंग अप किया। यस सर, एग्जैक्टली। या एनी अदर क्वेश्चन? वेरी गुड, केस स्टडी करो। बल्कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो आपका वर्क होता है ना, उसकी वैल्यू बड़ी होती है जब आप जॉब के लिए भी जाते हैं, एज यू हैव ऑलरेडी सेड इट। यस सर। और जब जाहिर सी बात है, जब एक चीज हमारे प्रैक्टिस में होगी, हमने उसके ऊपर वर्क किया होगा, तभी तो हम उसका आंसर दे सकते हैं। जब एक चीज हमने की ही नहीं होगी तो फिर हम उसके बारे में तो फिर क्या आंसर बताएंगे किसी को कि हमने। क्या बताएं बेटा, फिर वो फेक आंसर हो जाते हैं ना, बंदा कितना यस उनको सर, जस्टिफाई कर ऑब्वियसली। सके। वो फेक हो जाते हैं, फिर अब हम उनको ना बंदा डिफेंड कर सकता है ना उनको एक्सप्लेन कर सकता है, बिकॉज देयर इज नो रियलिटी, देयर इज नो ओरिजिनलिटी इन देयर। यस सर, डेफिनेटली। ये रुकइए, आप कुछ बात करना चाहते हैं? नो सर, मैं सुन रही हूँ आपकी डिस्कशन सुन रही कोई कोई एडिशन है जो आप करना चाहते हैं? हूँ। नो सर, ऐसे कुछ नहीं। क्योंकि लगता है आप खुश नहीं है। नो सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस सुन रही थी, फरहाना की डिस्कशन सुन रही थी सर, आप जो बात कर रहे थे। हाँ, तो चलो, मैं सुबह से ही सोच रहा था कि जरा कोर्स टोटल जो हमारे कंटेंट्स है, सिलेबस है, इसको जरा एक बार फिर से रिव्यू कर लीजिए, अच्छे अच्छे तरीके से कर लिया जाए, ताकि हमें पता हो कि हम किस लाइन पे, हमें डायरेक्शन रोड मैप मिल जाए ना मुकम्मल तौर पे। दैट्स व्हाट आई एक्चुअली एम्ड फॉर टुडे। तो कोर्स कंटेंट्स या सिलेबस के रेलेवेंट कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अब ये सारा क्लियर है आप सबको? यस सर, और क्लियर है। चलें, कोई 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 भी फिर भी अभी कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन स्टॉप हियर। एंड कल फिर जो मैंने असाइनमेंट दिया इस पे हमने बात करनी है, थोड़ी सी करेंगे। वो आर डन विद मॉड्यूल नंबर 1। तो कल थोड़ा सा करके 15-20 मिनट में उसको, तो वी कैन गिव यू ए probably a day break, or I don't know, but anyway we can give you some relief. Okay, so can we close here? यस सर, श्योर। Yeah, well, thank you so much. अगर असाइनमेंट वर्क एनीवे, मैंने इसलिए आपको भेजे कि आप उसको पढ़ो जरा, एंड देन we'll talk tomorrow, we'll discuss it. Thank यस you. सर। Bye.
Okay, Thank Khuda you. Hafiz. Thank you. Thank you, sir. Allah Hafiz. Thank you, sir. Allah Hafiz. Excuse me, Farhana, are you there? Yeah, I'm here, Ruqayya. Farhana, please, may I have may I have your contact number, please? I want to ask something from you in personal. All right, all right, all right. My number is also not in the group, PG set, or I will put it on there. okay, I'm Thank you. sending. Thank you very much.